Good morning, everyone. Welcome to Prebell with Team William in India. Today, December 24th, 2024. So it's 24/12/24. And please go through the disclaimer. Okay, let's begin. So, first with the Nifty 50 setup. So, yesterday it was a good day for the market. We tested the black line, that is the 200 DMA, but we were not able to close above that level. हाँ, इंट्राडे हम उसके ऊपर निकले थे, टिके भी थे थोड़े टाइम के लिए, बट द क्लोजिंग वाज बिलो द 200 DMA. The only concern that was, and that was expected, okay, come on, this is something not new. In the last 1 or 2 week of December, you will see the volume activity reducing. So that's what happened. The volume was lower. Even today, we are expecting that the volume will be lower, not more than 200 over here. आई डोंट थिंक कल से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिलेगा. द वॉल्यूम एक्टिविटी विल बी लेस. So the most important thing is that we close above the 200 DMA is important. ठीक है. So 800 के ऊपर, 850 के ऊपर एक बार जाएगा और वहां से ऊपर बंद आ जाएगा, then that will be a good support for the market. But in the current scenario, you won't get a good idea about the price volume action. तो एक वही थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे. अदरवाइज, सो ऑन द हायर साइड, आई थिंक येस्टरडे हाई के ऊपर निकला और 200 DMA के ऊपर टिका, देन इट विल बी पॉजिटिव मोमेंटम. ऑन द फ्लिप साइड, इफ वी सी दैट कल के लो के नीचे निकला और जो अभी रिसेंट लो बनाया 525 का उसके नीचे गया, then there will be some quick selling which we might see. But the probabilities are we might hold in a range. कुछ ज्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी इतना है नहीं. Okay, now let's take few news. So not major news coming up. Bharat forged to infuse around $64 million in its US arm. HG Infra arm signs a battery energy storage purchase agreement with NTPC. Okay, for FIIs, छोटा सा नेट सेलिंग बोला, उनका एक्टिविटी कम हो गया. एंड DIIs कंटिन्यू टू बी नेट बायर, ऑलमोस्ट 2000+ करोड़ का नेट बाइंग किया. देर आर अ फ्यू अदर न्यूज एज वेल. ओके, SBI कार्ड का नवंबर स्पेंड का डेटा आया था. तो स्पेंड्स वेर डाउन 19.74% वर्सेस ग्रोथ ऑफ 5%. and average ticket size down to 27% YOY. फिर क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, they have filed for a DRHP of 1,000 crore IPO. Right. Now let's take few other. So in the US market, the Dow was up around 0.2%, S&P was up around 0.7%, while Nasdaq was up 1%. Asian market, Shanghai up 0.4%, and Nikkei and Kospi down -0.2%. So globally देखो तो Qs flat to positive है. ग्लोबल क्यूज में कुछ नेगेटिविटी नहीं है देखने को. सो दैट विल बी लाइक गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स एज वेल. कि अगर ग्लोबली अभी नेगेटिविटी नहीं है तो याद रखना हम कोई मेजर गिरेंगे नहीं, क्योंकि नाउ वी आर लिंक्ड टू द ग्लोबल मार्केट्स. एंड इफ यू लुक एट द SGX, कल भी F&O में सिमिलर क्लोजिंग आया था अराउंड 760. सो इट इंडिकेट्स अ म्यूटेड ओपनिंग. कोई मेजर मूव एक्सपेक्टेड नहीं है ओपनिंग में, right? And if you look at the start of the day or the stock of the day, then we have selected Aster DM Healthcare. I think the healthcare sector is doing really well. Okay, the average revenue per bed is increasing. The number of beds are increasing. So a lot of positivity around it. Tourism हो रहा है, जो travel to tourism हो रहा है. So, and the way we are much under penetrated in the healthcare
इंडस्ट्री, और वहां से जो अभी हम जो स्केल अप हो रहा है, तो जो करंट प्लेयर्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड बड़े प्लेयर्स हैं, उनको बहुत फायदा होगा. सो इफ यू लुक एट द अर्निंग्स ऑफ एस्टेडीएम, so last few quarters have been really good one. Even the fund holding is increasing. Okay, the ratings are solid. The fundamental ratings are good. Okay, the technical ratings both are good. Buyer demand as well as the price strength of 77. And if you look over here, it had formed a cup with handle. ठीक है, कप विथ हैंडल बनाने के बाद एक थोड़ा ग्रेजुअल मूवमेंट आया, एंड इफ यू कैन सी दिस ग्रीन लाइंस ओवर हियर, इट इज फॉर्मिंग एन असेंडिंग बेस. हायर हाई, लो लो वाला. सो दिस इज अ पावरफुल बेस. आई थिंक एक बार असेंडिंग बेस से क्लीन ब्रेकआउट आ जाता है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज द ब्रेकआउट पॉइंट 525. तो 4% है अभी. तो एक बार ये ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा, देन आई थिंक द मार्केट, द स्टॉक कैन डू रियली वेल. That's it for today's session. Thank you for joining. See you again tomorrow at 8:45 a.m. Tomorrow it's a market holiday, so on 26th. Yeah. Thank you.